Hello students and welcome to Saurav's classes. My name is Ashmita and in today's class we are going to discuss about the current scenario of the poverty estimation in India. So किस तरह से poverty estimation का काम चल रहा है इंडिया में, कैसे हम लोगों को पता चल रहा है कि इतना सेक्शन बिलो द पॉवर्टी लाइन में है या फिर अबव द पॉवर्टी लाइन है, तो कैसे पता चल रहा है हम लोगों को। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि सदियों से किस तरह से हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेशन करते आ रहे हैं और करंट सिनेरियो क्या है। जो भी पॉवर्टी एस्टिमेशन का मेथड अभी मॉडर्न डे में चल रहा है, क्या वो सही है, क्या उसको लेके हम और वे फॉरवर्ड जा सकते हैं या फिर हमें ही कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, इन सभी को लेके आज का क्लास होगा। Now, according to the recent reports, more than a quarter of the population living in rural areas of India is basically below the poverty line. So, out of the total population living in the rural parts of India, 25.7% is living below the poverty line. Whereas in the urban areas, we can see that the situation is a bit better, with 13.7% of the population living below the poverty line. नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन सी चीजों से करी जाती है बेसिकली। तो अ कॉमन मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इनकम और द कंजम्पशन लेवल्स। मतलब जो आपका इनकम है उसके ऊपर बेस करके या फिर आपका जो कंजम्पशन लेवल है या फिर जो कंजम्पशन एक्सपेंसेस है उसके ऊपर बेस करके आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है। और अगर आपका इनकम या फिर कंजम्पशन लेवल लाइक इट फॉल्स बिलो अ मिनिमम गिवन लेवल, then only that particular household is said to be below the poverty line, that is below the BPL. तो किस तरह से मेजरमेंट्स किया जाता है, बहुत सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से हम आज वाकिफ होंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन करते आ रहे हैं। तो पहला जो चीज है वो है पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन। Poverty estimation in India is basically now carried out by the NITI Aayog's task force through the calculation of poverty line, which is based on the data which is captured by the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Programs Implementation, that is MQSPI. तो नीति आयोग अभी क्या है? नीति आयोग जो आजकल का जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है इंडिया में वो कैलकुलेट कर रहा है। तो नीति आयोग एक्चुअली में है क्या? NITI Aayog is basically a policy which has replaced the Planning Commission, which was earlier like responsible for calculating the poverty line in India. कुछ ही देर पहले हम लोगों ने ये डिस्कशन किए थे कि कंजम्पशन लेवल और इनकम लेवल के ऊपर पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है कि आप या फिर आपका हाउस होल्ड क्या बिलो द पॉवर्टी लाइन में है या फिर अबव द पॉवर्टी लाइन में है। तो ये कौन सी बेसिस पे किया जाता है? तो कंजम्पशन वर्सेस इनकम लेवल, ये एक्चुअली में है क्या और किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है? पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल्स। हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम किया जाता है, जो खोज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वो बेसिकली किया जाता है बेस्ड ऑन द कंजम्पशन लेवल एंड नॉट ऑन द इनकम ऑफ द पीपल। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो इनकम है वो बहुत ही वैरिड है। यहाँ पे बहुत ही टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। क्यों? अगर हम लेबरर्स की बात करेंगे, लेबरर्स तो पूरे साल काम नहीं करते हैं, कुछ पर्टिकुलर महीनों में उन लोगों को बहुत काम मिलता है और कुछ पर्टिकुलर महीने हैं जिनमें उन लोगों को काम ही नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम उनके जो इनकम लेवल्स है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कंजम्पशन लेवल या फिर कंजम्पशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसी का कैलकुलेशन करके हम ये साबित करते हैं कि वो हाउस होल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन में है या फिर अबव द पॉवर्टी लाइन में है। तो कंजम्पशन वर्सेस इनकम लेवल, तो क्यों ऐसा होता है हम लोग और भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कि क्यों कंजम्पशन लेवल या फिर कंजम्पशन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। पहला जो चीज है वो है वेरिएशन इन इनकम। Income of self-employed people like daily wage workers or daily wage laborers, you can say, is highly variable. Like they can get temporarily and specially paid, while consumption pattern are comparatively much more stable. That is why we take consumption pattern or consumption level
as the main source of calculating the poverty estimation in India. और जो एडिशनल इनकम होता है, जैसे कि बहुत लोगों को एडिशनल इनकम करना पड़ता है, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? मेन सोर्स ऑफ इनकम या फिर मेन जो इनकम है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो एडिशनल इनकम कर रहे हैं ये लोग, इसका कहाँ से हम लोग हिसाब करेंगे? तो ये भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं while just going through the poverty estimation in India. चलिए बात करते हैं डिटेल्स में about the additional income. Now, even in the case of regular wage earners, there are additional side incomes in many cases, which is difficult to take into account. Next है data collection का. In case of consumption based poverty line, क्या होता है? Sample based surveys किया जाता है for a period of 30 days. This span of 30 days is called reference period, in which households are basically asked about their consumption of the last 30 days and is taken as the representative of general consumption. तो इसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं poverty estimation. Whereas tracing the general pattern of income is not at all possible, as I have already told you. So what is this reference period after all? It is the duration or the period during which the survey is conducted by the NSSO workers, in which they ask certain questions to the households. तो आज हम कुछ की टर्म्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पॉवर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ की टर्म्स बहुत ही नेसेसरी होता है इस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए क्लियर होने चाहिए. पहला है पॉवर्टी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एस्टिमेशन, सो वी शुड बी नोइंग मोर एंड मोर अबाउट पॉवर्टी. तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी को ऐसे बोला जाता है कि पॉवर्टी इज बेसिकली प्रोनाउंस्ड एज द डिप्राइवेशन इन वेल बीइंग एज वेल एज इट ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ मेनी डायमेंशंस. क्योंकि हम किसी एक चीज से पॉवर्टी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पॉवर्टी का बहुत सारे डायमेंशंस होता है. It includes the low incomes and the instability to acquire the basic goods and services which are necessary for survival with dignity. दूसरी चीज जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे वो है poverty line. The conventional approach to measuring poverty is basically to specify a minimum expenditure or income which is required to purchase a basket of goods and services. जो नेसेसरी होता है, बेसिकली हमारे जो नेसेसरीज होता है उसको हम बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज होता है और जो सेटिस्फाई करता है बेसिक ह्यूमन नीड्स को. एंड दिस मिनिमम एक्सपेंडिचर कैन बी कॉल्ड एज द पॉवर्टी लाइन. अगर उससे नीचे चला जाता है सिचुएशन तो उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं. तो क्या है ये पॉवर्टी लाइन बास्केट? द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज बेसिकली नेसेसरी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन बास्केट और द PLB. और एक जो चीज है वो है कि पॉवर्टी रेशियो क्या है. This is basically the proportion of the population below the poverty line, and this is particularly called the poverty ratio as well as the head count ratio or the HCR. Next हम बात करेंगे कि poverty estimation का ये need जो है, urge जो है, ये कहाँ से आया है, हमें क्यों करना पड़ा poverty estimation in India, और कौन से टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो करके हम आज के दिन में आए हैं with the latest poverty estimation. Now, impact of the welfare schemes. पहले तो poverty estimates are not just important for academic purpose, but they are also crucial to track the impact and also the success of various government policies. क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पेशली सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं which are basically intended to eliminate the poverty. तो वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको भी हमें चेक करना है. तो इसलिए poverty estimation बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. और जो BPL census है, BPL census is basically conducted by the Ministry of Rural Development along with the partnership of the state in order to identify the poor households. तो इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स और BPL सेंसस को मिला के हम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर जो पुअर हाउस होल्ड्स का जो भी परिवार है उसको हम ढूंढते हैं और उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं. Now, under the poverty elimination plan, the poverty estimates in the form of poverty line, which are basically used to formulate the poor-centric poverty elimination plans. Next है constitutional requirement. इसके लिए भी poverty measure किया जाता है.
poverty estimation paves the way for poverty elimination, and that in turn prepares the ground for a just and equitable society. अभी हम लोग broadly discussion करेंगे कि किस तरह से हम लोग पॉवर्टी को मेजर करते हैं. कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम किसको कहते हैं? According to the United Nations World Summit for the Economic Development, absolute poverty is basically a condition which is characterized by severe deprivation of basic human needs, like including food, then safe drinking water, then sanitation facilities, or you can say healthcare, lack of healthcare facilities, then shelter, then education and information. Everything you are deprived of. And it depends not only on the income but also on the access to the social services. तो ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मतलब इसका जो पॉवर्टी थ्रेशोल्ड है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो the poverty threshold in absolute measurement of poverty is set using the monetary value of the basket of the essential products that are required for the basic needs, and every household whose income is less than this value will be classified as poor. Absolute poverty उतना चला क्यों नहीं? क्योंकि इसका limited scope है. Now, absolute measurements of poverty, which is used by the World Bank and is also used by the developing countries like India, it relies on a poverty line which remains constant across geographies and also over time. So, with dynamic changes, it also needs to be changed, but there is lack of change in it, so it is not being used so much. So, what is the basic criticism for it? Absolute measurement of poverty basically overlooks the deprivation within the countries or the higher cost of living in developed countries. So we have done the discussion on absolute poverty. Now we are going to discuss about the relative measurement of poverty. It is present when a household income is lower than the median income in a particular country and is used mainly by the developed countries. Now, those who fall in the category of relative poverty are not necessarily deprived of all the basic needs, but they may not experience the same standard of living as the majority of society, or in other words, we can say they are relatively deprived. Like if we compare them with the standard of living of the other people in the developed countries, then they are basically deprived of those stuff which the developed countries people are getting. So relatively, they are on the poorer side. So what is the poverty threshold for this relative poverty? In this method, certain percentage of economically bottom population is always considered below the poverty line, because you see, if we compare this relative poverty, like some people are obviously in a developing country, for them poverty can be something else, and people in the developed country, for them poverty can be something else. So you see, it differs from person to person, from people of a developed nation, and if we compare it with the people of a developing nation, it will definitely differ. So what is the criticism for this relative poverty? This approach ignores the importance of the absolute standard of living and also assumes that relative income is all that matters for welfare. जो previously जो data collection का methods होता था, उसके बारे में अभी हम लोग discussion करेंगे. तो एकदम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के टाइम से, जब पॉवर्टी का एस्टिमेशन पहले शुरू हुआ था. स्टार्टिंग फ्रॉम 1993 is the Uniform Resource Period, that is URP. From 1993 to 1994 क्या हुआ था? Poverty line was basically based on URP data, जिसको हम Uniform Resource Period कहते हैं. उसके डेटा के अनुसार पॉवर्टी कैलकुलेट किया जाता था, which involved asking people about their consumption expenditure across a 30-day recall period. That is the information that was based on the recall of consumption expenditure in the previous 30 days. तो आप लोगों ने consumption के ऊपर कितना खर्चा किए हैं in the past 30 days, that was basically the data that was collected. So this poverty estimation was done in the year 1999 to 2000 onwards, and the NSSO switched to an MRP method which measured the consumption of 5 low frequency items.
तो इनमें से क्या क्या लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स थे? एक था क्लोथिंग, दूसरा था फुटवेयर, तीसरा था ड्यूरेबल्स एंड चौथा था एजुकेशन एंड पांचवा था इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो ये पांचों को मिला के एक डेटा तैयार किया जाता था कि कितना खर्चा हो रहा है over the previous years and all the other items over the previous 30 days. That is to say that for the first 5 items that I have just mentioned, survey respondents were basically asked about the consumption in the previous 1 year, and for the remaining items that I haven't told about, like from the 5 low frequency items, I haven't told about the other items that we normally use also. So those things, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंसेस कितना हुआ, वो प्रीवियस 30 डेज का कैलकुलेट किया जाता था। और जो 5 लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स के बारे में हमने यहाँ पे बताए हैं, उसमें उसका जो एक्सपेंसेस है वो प्रीवियस 1 ईयर का कैलकुलेट किया जाता था। तो इसको लेके टोटल एक डेटा प्रिपेयर किया जाता था जिसके बेसिस पे पॉवर्टी एस्टिमेशन कैलकुलेट किया जाता था। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारे ऐसे कमिटीज आए या फिर जो पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स थे वो भी बहुत इम्प्रूव हुए, लेकिन सभी डिस्कार्ड कर दिया जाता था बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स। इसके बाद आया 2009 में तेंदुलकर कमिटी। तो तेंदुलकर कमिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तेंदुलकर कमिटी में हुआ क्या आखिर? Expert group, it was an expert group, like it was constituted by the planning commission and it was chaired by Suresh Tendulkar, and basically it was constituted to review the methodology for poverty estimation and also to address certain shortcomings of the previous methods. तो previous methods discard किए गए थे, तो previous methods में क्या क्या गलती थे उनको highlight किया गया so that the next plan or the next committee won't repeat those mistakes again while formulating a new poverty estimation method. पहला था obsolete consumption pattern। ये क्या था? ये एक shortcoming निकाल के दिखाया गया। It was a highlight shortcoming by the Tendulkar committee। तो इसमें क्या हो रहा था? Consumption patterns were basically linked to the 1973 to 1974 poverty line baskets of goods and services। poverty line basket में के बारे में हमने already discussion कर लिए हैं। जो basic necessities हैं उसको हम poverty line basket में रखते हैं। Whereas there were significant changes in the consumption pattern of the poor since that time। तो अगर हम calculate करेंगे 1973 का कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल एंड आज के कंजम्पशन पैटर्न, तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तब का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है, तो बहुत ही डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न होता है। चाहे वो लाइक खाने का कंजम्पशन की बात हो रहा हो या फिर किसी चीज़ की पहनने की कंजम्पशन की बात कर रहे हैं या फिर लाइक टूथपेस्ट की कंजम्पशन की बात करें या फिर सोप की कंजम्पशन की बात करें या फिर ड्रेस की, सभी चीज़ को हम कंजम्पशन कह रहे हैं यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ को यूज़ करना मतलब आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ को मॉडिफाई किया गया है, हम लोग नई नई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो 1973 का या फिर 1974 का या फिर उस दौरान का जो कंजम्पशन लेवल था वो तो बहुत ही अलग था, तब का टाइम बहुत ही अलग था। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स आ रहा था, तो इसका जो कंजम्पशन पैटर्न था ये बहुत ही ऑब्सोलेट था, ये आउटडेटेड था, क्योंकि ये चेंजेस के साथ साथ पॉवर्टी एस्टिमेशन प्लान को चेंज नहीं कर रहा था। उसी बेसिस पे मतलब उस टाइम का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसी को लेके ये सभी न्यू टाइप ऑफ एस्टिमेशन फॉर्म्युलेट कर रहे थे। तो ये तो ऑब्सोलेट हो गया क्योंकि आज का कंजम्पशन पैटर्न तो बहुत ही डिफरेंट है, पुअर पीपल के लिए भी बहुत ही डिफरेंट है। तो this changes in the consumption pattern was basically not reflected in the poverty estimate. So the previous methods were discarded because of obsolete consumption pattern. Next है inflation adjustment. Now there were issues with the adjustment of prices for inflation and both spatially across regions as well as temporarily across time. So inflation का effect नहीं दिखाया गया while calculating the poverty estimates. तो ये भी गलत बात है क्योंकि विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस। तो चीज़ों की रेट बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, किसी चीज़ का घट रहा था, तो सभी चीज़ों को देख के पॉवर्टी एस्टिमेशन करना चाहिए था, लेकिन ये फैक्ट को भी इंक्लूड नहीं किया गया। हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर,
इसको भी नेग्लेक्ट किया गया. Earlier the poverty lines assumed that health and education would be provided by the state and also formulated the poverty lines accordingly. So इसको भी नेग्लेक्ट किया गया. तेंदुलकर कमेटी का आखिर में recommendations क्या क्या था? They recommended that there should be a shift from calorie consumption based poverty estimation. So what is this? Now it is basically based on calculations on the consumption of the items like cereal, then pulses, then milk, edible oil, then non-vegetarian items, then vegetables, then fresh fruits, और भी जो भी चीज़ें कंजम्पशन में यूज़ होता है जैसे कि फुटवेयर, क्लॉथिंग, फिर फ्यूअल, एजुकेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टॉयलेट गुड्स, सभी चीज़ों का जो कैलकुलेशन है ये सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करना चाहिए. तो इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा while doing the poverty estimates. तो और क्या क्या recommendations किया गया by the तेंदुलकर कमेटी? यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट का रिकमेंडेशन किया गया जिसमें अनलाइक द अलग कमिटी, एक कमिटी बैठा था प्रीवियसली जो डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो किया गया था वो है यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट. So unlike the Alag committee which relied on separate PLB for rural and urban areas, Tendulkar committee computed basically the new poverty lines for the rural and the urban areas of each state, which was based on the uniform poverty line basket, and found that all India poverty line in the years 2004 to 2005 was around rupees 446.68 per capita per month in rural areas. And it was around rupees 578.80 per capita per month in the urban areas. नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन किया गया है वो है कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड कर दिया जाए. Incorporation of private expenditure on health and education should also be considered while estimating poverty. Next कुछ price adjustment का procedure का recommendation किया गया था by the Tendulkar committee, which said that a new method of updating the poverty lines and adjusting the changes in prices and patterns of consumption should be considered using the consumption basket of people which is close to the poverty line. और एक जो चीज रेकमेंड किया गया था वो है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का, as opposed to the uniform reference period based estimates that were used in earlier methods of estimating poverty. तो तेंदुलकर कमेटी ने कंप्यूट किया था poverty lines for the years 2004 to 2005 at a level that was equivalent. Now, with what was it equivalent? It was equivalent in purchasing power parity, that is PPP, which turns to rupees 33 per day. तो purchasing power parity क्या है आखिर? PPP का जो मॉडल है वो basically it tells us about a method which was used to work out the money that would be needed to purchase the same goods and services in two countries. So same amount of money that would work out to purchase the same goods and services in two countries, that was the purchasing power parity. उसके बाद आया रंगराजन कमेटी. तो ये कमेटी ने क्या एस्टैब्लिश किया? Now this committee was set up in the backdrop of national outrage over the Planning Commission's suggested poverty line of rupees 22 a day for rural areas. Now objective of this committee was to review the international poverty estimation methods and also indicate whether they are based on these, like a particular method for empirical poverty estimation can be developed in India. Objectives of this committee was to review the international poverty estimation methods, and they also had the objective to recommend how these estimates of poverty can be linked to eligibility and entitlements under the various schemes of the government of India. This committee also recommended certain things. They recommended the methodology that can be used. The Rangarajan Committee estimation is based on an independent large survey of households by the Center for Monitoring Indian Economy, that is CMIE. Now it has also used different methodology wherein a household is considered poor if it is unable to save. Normative and behavioral level. Now poverty line according to the Rangarajan Committee should be based on normative level of adequate nutrition. Like it included ideal as well as desirable level of nutrition. Like this means that हर एक इंडिविजुअल के लिए उसका जो आइडियल या फिर जो डिजायरेबल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है
और जो एक्सपेंसेस वो करता है कंजम्पशन के ऊपर, मतलब फॉर द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशन, वो डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए न्यूट्रिशन लेवल सेम नहीं होता. किसी को कुछ और पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है. तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ हाउ मच expenses he or she wants to incur on the nutrition that he or she is consuming. Behavioral determination of non-food expenses. This was also considered as a recommendation by the Rangarajan Committee. That is what people use or consume as per the general behavior. अगर एक टाइम में आपको लगता है कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, तो आप झट से आइसक्रीम खरीद लेंगे, लेकिन आप ही के जैसे एक दूसरे इंडिविजुअल को उस टाइम आइसक्रीम नहीं खाना है, तो वो आइसक्रीम पे वो खर्चा नहीं करेंगे. तो इस तरह से अगर हम लोग ये प्राइवेट या फिर जो बिहेवियरल सडन एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं, अगर इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, तब जाके हमारा जो पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो कैलकुलेशन है वो सही रहेगा. लेकिन रंगराजन कमेटी के हिसाब से पॉवर्टी किस तरह से एक्चुअली कैलकुलेट किया जा रहा था. पर्सन स्पेंडिंग बिलो ₹47 a day in cities and ₹32 in villages can be considered as poor by the Rangarajan Committee. And based on this methodology, Rangarajan Committee estimated that the number of poor were around 19% higher in the rural areas and 41% more in the urban areas than what was actually estimated by the Tendulkar Committee formula. Now, what is modified mixed reference period? Instead of the mixed reference period, that is the MRP, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ देर पहले ही बात किए हैं, this Rangarajan Committee, it recommended the modified mixed reference period, that is MMRP. Now, in which reference periods for different items were taken into account. जैसे कि पहला होता है 365 days का. 365 days for clothing, footwear, education, institutional medical care and also for durable goods. उसके बाद आता है 7 days. 7 days for edible oil, egg, fish and also meat. And vegetables are also included, fruits, spices, beverages, then refreshments are there, processed foods are there, then pan, then tobacco, intoxicants, सबका खर्चा लिया जाएगा 7 days के अंदर. सब खर्चे का हिसाब लिया जाएगा within a span of 7 days and then it would be recorded. उसके बाद आता है 30 days का. 30 days for the remaining food items. 30 days for the remaining food items जैसे कि fuel and light, miscellaneous goods and services, including the non-institutional medical rents and taxes also. So what was the criticism for the Rangarajan Committee? Rangarajan Committee did everything, but it missed the opportunity to go beyond the expenditure-based poverty rates and examine the possibility of a wider multi-dimensional view of deprivation. फाइनली जो मॉडिफाइड फॉर्म में जो लाइक मोस्टली फॉलो होता आ रहा है वो है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहा है. द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस अ पर्सन एज एक्सट्रीमली पुअर इफ ही और शी इज लिविंग ऑन लेस देन 1.90 international dollars a day, which are adjusted for inflation as well as price differences between the countries. Asian Development Bank too has its own poverty line which is currently at $1.51 per person per day. तो इसका जो challenges है ये क्या क्या है? Components of PLB, मतलब जो poverty line basket है उसका components क्या है, उसी को लेके थोड़ा सा challenges face कर रहे हैं हम लोग poverty estimation में. जैसे कि determining the basic components of the poverty line is one of the biggest challenges of poverty line estimation because of the price differentials, which basically vary from state to state as well as from period to period. और भी जो challenges है वो include करता है demographic and economic dynamics, like further consumption pattern, nutritional needs and also prices of components. They keep on changing, right, as per the dynamics of the macroeconomy and demography. So, उसका track रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. Next है lack of consensus. Now, lack of consensus among the states over the acceptance of Tendulkar and Rangarajan Committee report is creating a chaos. Some states such as Odisha and West Bengal have already supported the Tendulkar poverty line, while others such as Delhi, Jharkhand, Mizoram and so many other states are there have supported the Rangarajan report. The current official measures of the poverty are basically based on the Tendulkar poverty line, which is fixed at daily expenditure of ₹27.2 in rural areas
and it's rupees 33.3 in urban areas and is criticized by many for being too low. Now, what is the way forward? What are we looking forward to? What kind of estimation or what kind of changes are we looking forward to for poverty estimation in the modern day? Now, redefining the poverty lines. Poverty lines have to be recalibrated, like depending on the changes in income, then changes in the consumption patterns, as well as changes in the prices. As India is now a middle income country, and it has an estimated per capita income of around $9,000 in purchasing power parity. So according to economists, poverty line of $3.20 translates into like around rupees 75 a day, or 68% higher than the Tendulkar poverty line. Now, viable poverty line. What is this viable poverty line? It makes sense to set the poverty line at a level that allows the households to get 2 square meals a day and other basic necessities of life. Another thing that can be taken into consideration is the hybrid of absolute and relative measurement of poverty. Now, the hybrid approach, which would measure the poverty from the perspective of a common global standard of living and relative poverty within the countries, is the hybrid one. The poverty line in case of hybrid model would be equivalent to the income which is required to achieve a certain welfare status, which includes the basic nutrition as well as the social inclusion. Next is political economic equilibrium. Obviously, this is very much required. Indian political, policy and also administrative systems have the ability to adjust to the new realities of the transition to a middle income country, and in which poverty does not mean living at the edge of hunger, but rather lack of income. Lack of income to take advantage of the opportunities which is thrown up by a growing economy. The focus of government spending therefore should be on the provision of public goods rather than subsidies. So that was the entire discussion for today's class. We are going to meet once again in our next classes with more such discussions.